Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and doing good. This is Mary Fatima here and welcome back to our computer online session of class 2. In the previous video, we have completed chapter number 1. Now today I'm going to start with chapter number 2. Okay, so all of you please take out your books and open page number 13. So here it is. This is your chapter number 2 and the name of the chapter is Role of Computers. Role of Computers. So in this lesson we are going to learn role of computers, identifying the fields where computers are used, identifying the places where computers are used, and skills to learn. So all these things we are going to discuss in this chapter. Okay student. So first of all let me tell you the roles of computer. What are the roles of computer? So computer is a very useful device. Today there is a widespread use of computers in almost all important activities of daily life. We can see computers at schools, homes, offices, hospitals and other several places. Let us know about the role of computers at various places. So all of you knows now that computer is a very useful device and today it is almost used in every field, right? It is used in schools, homes, offices, hospitals. So all these places we are going to learn in this chapter, and we are going to learn the roles of computer in all these fields. Okay, so first of all I'm going to tell you the role of computer in school. Report cards are prepared by your teacher with the help of computer. Yes, all of you knows it now very well that your teachers are preparing report cards, right? Now number 2, computers are used in the admission process, maintaining school library and collecting fees, right? So all of you knows that in admission process also that computers are being used. Your each and every information is recorded into the computer, like your name, your age, date of birth, father's name, mother's name. So all your information is being stored in the computer. Okay, and fees is being collected, right? Now teachers take help of computers while teaching. Yes, your teachers take help of computer. Your teachers take you to the computer lab, they give you practice for operating the computer, right? Your teachers teaches you on smartboard is also a type of computer. Okay students, now turn your next page, page number 14. So role of computer in home, role of computer at home. So first role I'm going to tell you that we take assistance of computer in doing our homework and playing games, right? You are taking the help of computer when you are doing homework and when you are playing games, right? In this way computer help you as well as entertain you. Okay, the next role, your parents plan their monthly budget with the assistance of computer. Your mother, your father, they both plan your monthly budget with the help of computer. Okay. Now next, the computer assists you in listening to music and watching movies, right? You can listen to music on computers as well as you can watch movies. I know nowadays you all are watching movies. This is the best way to entertain, right, all of you? Okay. And the next use, the computer assists us in buying things while sitting at home. Right, all of you knows it now about online shopping nowadays. As you all know that lockdown is going on, so you do not need to go outside, you can shop by sitting at your home. There are a lot of online shopping sites from which you can go and you can purchase anything, right students? So here is one point. Did you know? Do you know? Buying items from home using a computer is known as online shopping. Just now I told you when we are sitting at our home and when we are buying something, that is called online shopping. Means ghar baithe baithe shopping karna. This is the easiest way to do shopping. It saves our time also. Okay. You can make payments of your bills using computers. With the help of computers you can make your payment, like you can do that internet I can say internet transaction from that. Okay, internet banking. Okay, now next, role of computers on shops and hotels. So what are the role of computers on shop? Computers are used in shops to make bills, maintain record of stocks and descriptions of sales of various
items. Okay, so you all have noticed when you go to the shop or mall, you have seen that when you are purchasing something, then they are making your bills on the computer and they are giving you a slip, right? So computer helps us in shops also, and in hotels. When you are going in a hotel and you are staying there, in the hotel they are maintaining your record, like your name, your age and all, your address, each and everything they are maintaining in the computer. Okay, now next, role of computer in offices. The computer assists in typing and printing documents. With the help of computer you can print the documents as well as you can type also, because in office every day there is a lot of work to do. Okay, the computer assists in sending and receiving messages. Yes, with the help of computer within seconds you can send as well as you can receive messages. As here also in do you know section you can find out, message sent and received through computers are popularly known as emails. Message sent and received through computers are popularly known as emails. सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? इलेक्ट्रॉनिक मेल, राइट? आप कंप्यूटर से घर बैठे हुए विद इन सेकेंड अपने मैसेज सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो. दे कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन सेकेंड्स विच सेव्स टाइम एंड मनी. आप घर पे बैठे कहीं भी अब्रॉड में और विद इन योर कंट्री कहीं भी आप मैसेज कर सकते हो. इट सेव्स योर टाइम एज वेल एज योर मनी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पेज. बैंक्स. So, role of computer in banks. Computers are used in maintaining the particulars and accounts of the customer. Yes. Suppose I'll give you an example. If I'll go to a bank and if I'll tell them to open my account, they will take all my details and they will feed my information or data into their computer. That means they are maintaining my record. No need to do the paperwork and all. Okay. Now, we take the assistance of computer in withdrawing money from ATM. We take the assistance of computer in withdrawing money from ATM. The full form of ATM is automated teller machine. Automated teller machine. So all of you knows about ATM, na? Your parents are going to ATM and then they are withdrawing the money from there, and it helps you to draw your money very fastly, right? If you are going to bank, sometime it takes a lot of time, half hour, 20 minutes, 50 minutes, like that. But if you are going to ATM, within seconds or within minutes you can withdraw your money. Okay. Now, updating all the accounts transaction, that means whatever you are receiving, whatever you are depositing there, all the transactions are being updated in the computer. Paying and receiving checks in cash. So you can pay the checks as well as you can receive the cash by going to the banks. So these are the role. This is the role of These are the roles of computers in the banks. Okay, now coming to the next, we'll start with hospital. Role of computer in hospitals. So computers are used by doctors in surgery. Yes, doctors are using computer in their surgery. Computers are useful in diagnosing many diseases. Yes, computers are useful in diagnosing बहुत सारी diseases का पता लगाते हैं. बहुत सारी computers machineries होती हैं, like your X-ray machine, ultrasound machine. They all are connected through the computer, and with the help of that, your diseases are being diagnosed. Okay, now medical reports are prepared with the help of computer. Yes, medical reports are being prepared. आपको आपकी medical report मिलती है, blood reports मिलती हैं. There are different medical reports and all which are being prepared with the help of computer. Okay. As you have seen your X-ray, someone's X-ray report or some other report आपने देखा होगा वो printed form में होती है, तो that is being done with the help of computer. Okay students, now turn your page number 18. Airport and railway station. Now we are going to discuss role of computers on airport as well as on railway station. Computers play an important role in reservation and cancellation of ticket for passengers. Nowadays, computers play an important role in reservation. आप अपना reservation करवा सकते हो या cancellation भी करवा सकते हो ट्रेन से, ट्रेन के लिए एयरपोर्ट में या फिर रेलवे स्टेशन पे. Okay, we can know about the arrival and departure of trains and flights with the help of computers. कंप्यूटर की हेल्प से आप अपनी जो आपकी फ़्लाइट है आने वाली या जाने वाली उसके टाइम का भी पता लगा सकते हो. ओके, बिकॉज ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स. नाउ नेक्स्ट, द कंप्यूटर हेल्प्स टू कीप ट्रैक ऑफ लोकेशन, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स. सो स्टूडेंट्स, द कंप्यूटर्स हेल्प्स यू टू ट्रैक द लोकेशन.
कि आपकी ट्रेन इस टाइम कहाँ है या आपका एरोप्लेन इस टाइम कहाँ है, उसकी लोकेशन, स्पीड और डायरेक्शन, वो सारा आपको कंप्यूटर बताती है। कंप्यूटर में कुछ इस टाइप के सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं जो उन एरोप्लेन से और ट्रेन से कनेक्टेड होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। ओके, now, do you know reservation means advance booking in trains, buses or planes and rooms in hotels. Computers are widely used for this purpose. So here is the meaning of reservation. Reservation का means क्या होता है? जब आप advance यानी कि पहले से booking करते हो अपनी ट्रेन में, ट्रेन्स में सीट्स बुक होती हैं ना आपकी, राइट? इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग जर्नी तो आपकी ट्रेन्स में सीट्स बुक होती हैं, एरोप्लेन में या फिर बसेज में भी, या फिर जब आप कहीं घूमने जाते हो तो आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स रूम बुक करते हैं होटल के। तो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड रिजर्वेशन, इनको रिजर्वेशन बोलते हैं। तो ये सारा जो रिजर्वेशन का डेटा मेंटेन होता है, दैट इज बीइंग डन इन द कंप्यूटर। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, इन डिजाइनिंग, role of computer in designing. So what is the role? Computers are used by architects in designing buildings, houses and flyovers. तो आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो आपकी बिल्डिंग्स, हाउसेस या फ्लाईओवर्स जो भी होता है, पहले इसका मैप बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये जो भी होता है स्टूडेंट्स, वो सब कंप्यूटर्स की हेल्प से करते हैं आर्किटेक्ट। ओके, नेक्स्ट, कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय इंजीनियर्स इन डिजाइनिंग कार, एरोप्लेन्स एंड अदर मशीन्स. So engineers are also using computers in designing the cars, aeroplanes and different types of machine. They are having their rough model on the computer, इस पे डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद वो जो भी न्यू कार लॉन्च कर रहे हैं या जो भी बना रहे हैं मशीनरी, उसको बनाते हैं। ओके, नाउ कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन डिज़ाइनिंग क्लोथ्स, शूज़, etc. Yes. Now computers are helpful in designing advertisements, animations, movies and a lot more things. बहुत सारे यूजेस होते हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर से डिज़ाइन करते हैं एडवर्टाइजमेंट। आप लोगों ने कभी जब आप स्ट्रीट पे जाते हो, वॉक करते हो, तो बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखते हैं जिसमें किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट होता है, कोई शैम्पू का, फ़ोन का। तो वो जो प्रिंट आउट्स वगैरह होते हैं बड़े बड़े, वो सारे कंप्यूटर की हेल्प से ही डिज़ाइन करे जाते हैं। एनिमेशन, आई टेल यू, एनिमेशन जो होती हैं वो आपकी कार्टून मूवीज़ जो बनाई जाती हैं उनके प्रोसेस को एनिमेशन बोलते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कार्टून इन विच द कार्टून सीम्स टू मूव, ओके, उसको हम एनिमेशन बोलते हैं। देयर आर लॉट ऑफ कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज लाइक स्टुअर्ट लिटिल, बाल गणेशा, छोटा भीम, यू ऑल आर वॉचिंग ना, राइट? Now coming to the next page, in publishing, role of computer in publishing. Computers are useful in printing newspapers, magazines, books and pamphlets. तो कंप्यूटर क्या यूज़ होता है कि आपके न्यूज़पेपर को प्रिंट करते हैं, मैगजीन्स प्रिंट होती हैं, बुक्स प्रिंट होती है और पैम्पलेट्स, बुक्स आपकी जो स्कूल बुक है, दिस इज़ ऑल्सो प्रिंटेड बाय द कंप्यूटर। ओके, पैम्पलेट्स बच्चों वो होते हैं जो जिसमें आपके किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट होता है। वो एक छोटे छोटे पेपर या 2 पेजेस का होता है और उसमें किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट होता है और साइड बाय साइड वो एडवर्टाइजमेंट आपके घर पहुंचाया जाता है। ओके, दैट आर कॉल्ड पैम्पलेट्स. सो ऑल दीज थिंग्स आर being published with the help of computer as well. Now computer has help in designing and printing of this book. As you can see, a picture is here. So this book is also designed with the help of the computer. Okay, जो भी डिज़ाइनिंग होती है बुक्स की, कवर पेज, लास्ट पेज, मिड पेजेस, वो सब कुछ डिज़ाइनिंग we can do with the help of computer. Now in scientific research and defense, role of computers in scientific research and defense. तो साइंटिस्ट भी यूज़ करते हैं कंप्यूटर को। कैसे? कंप्यूटर्स आर वेरी हेल्पफुल टू साइंटिस्ट इन डूइंग रिसर्च, डिज़ाइनिंग रोबोट्स एंड फोरकास्टिंग वेदर। जो साइंटिस्ट होते हैं, जो भी वो अपनी रिसर्च करते हैं, न्यू इन्वेंशन, न्यू रिसर्च, वो सब कुछ कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं। रोबोट्स डिज़ाइन करते हैं। फोरकास्टिंग वेदर मीन्स वेदर का पता लगाना कि विद इन अ वीक कल को मौसम वो जो आपका वेदर होगा, वेदर इट विल बी सनी, रेनी, ईच एंड एवरीथिंग दैट कैन बी फोरकास्टेड विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर, बिकॉज कंप्यूटर में आपके वेदर फोरकास्ट का सॉफ्टवेयर पड़ा होता है, राइट? Now computers are very useful in launching and controlling satellites, rockets and missiles. So all of you knows about ना satellites, missiles, पता है ना आप सब लोगों को, rockets। तो ये जो सब इनकी लॉन्चिंग वगैरह होती है, ये सब कंप्यूटर की हेल्प से ही होती है और कंप्यूटर से ही हम इसको कंट्रोल करते हैं। कंप्यूटर में कुछ इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, in learning new skills,
नई नई चीज़ों को जानने में भी, नई नई चीज़ों को सीखने में भी कंप्यूटर हमारी हेल्प करता है. हाउ? द कंप्यूटर असिस्ट इन लर्निंग हाउ टू ड्राइव ए कार और हाउ टू फ्लाई एन एरोप्लेन. कंप्यूटर हमें कार ड्राइव करने में भी हेल्प करता है और एरोप्लेन को फ्लाई करने में भी. ओके. द कंप्यूटर असिस्ट इन लर्निंग न्यू स्किल्स सच एज वेरियस लैंग्वेजेस, टाइपिंग, कुकिंग, गार्डनिंग, ETC. राइट, नई नई चीज़ें हम कंप्यूटर पे सीखते हैं. नाउ डेज यू ऑल आर एट योर होम, यू कैन ट्राई न्यू थिंग्स, यू कैन लर्न न्यू थिंग्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, बिकॉज सब लोगों के कंप्यूटर में आजकल इंटरनेट है. एंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन फाइंड आउट ईच एंड एवरीथिंग. राइट, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी आपकी मम्मी न्यू रेसिपीज़ बनाती हैं आपके लिए. कहाँ से बनाती हैं? वो कंप्यूटर से सर्च करके बनाती हैं. आप सोचोगे कंप्यूटर पे नहीं, मम्मी तो फ़ोन पे सर्च करती हैं. तो स्टूडेंट, फ़ोन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ मिनी कंप्यूटर. राइट, उसमें इंटरनेट चलता है, मम्मी वहाँ से सर्च करती हैं. ओके, सो यू कैन लर्न वेरियस थिंग्स. Now, do you know you gain knowledge about things such as driving without even using actual vehicles? These are known as simulators, which work with the help of computers. Okay, आप कार को बिना चलाए भी उसके बारे में जान सकते हो, उसके बारे में सीख सकते हो, तो उसको हम सिमुलेटर्स बोलते हैं. ओके, उस इंफॉर्मेशन को गैदर करना. नाउ यूजफुल टिप इज देयर. Keep on saving your file on computer by pressing shortcut keys Ctrl+S after every 2 to 3 minutes, as activating auto save feature in MS Office. It automatically saves your file. तो जब आपको अपनी कोई भी फाइल सेव करनी है तो what you have to do, you have to press Ctrl+S. You have to press Ctrl+S. आपकी MS Office में जो भी आप फाइल पे वर्कआउट कर रहे हो, that will be saved. So Ctrl+S is your shortcut key of saving a file. Okay, student. So I hope the chapter is very clear to you. Right. But one more time, I'll suggest you to go through with the video and please try to understand the chapter again by yourself. Okay. And now one homework is also there for you. Homework is activity time, which is on page number 24. Activity time, page number 24. So what you have to do here, you have to collect any one computerized bill and paste it in the space below. Here, as you can see, space is given. So in this space, you have to paste any computerized bill. Maybe you have visited to a shopping mall, or electricity bill is there, or some other bills are there that is generated with the help of computer. You can ask your mother. So you can paste that bill here. So this is homework for you. Okay. Hint: bill from a hotel, toy shop, bookshop, etc. Matlab lot of shops are giving you that computerized bill. So any of the bill you can paste here in the space provided. Okay, students. Now in the next video we'll meet again with the remaining work. So till then, all of you stay home, stay safe, take care and enjoy.